Start now. So basically, as you know, that you might be using eVitalRx from a couple of time or couple of months from now onwards, and you might also have multiple pharmacies that are running on your platform, like learning on eVitalRx. So this is basically for the clients that are having more than one pharmacy and who are running on the same GST. So basically what happens in this case, so that what we are going to discuss is about how a pharmacy, like if you are running more than two pharmacies, and how you can transfer the stock from one branch to another branch, and we are going to discuss on that part. So there are some of the prerequisite, like for example how that can happen. So for that your both of the branches should be under the same GST, so then you can seamlessly transfer the stock from one branch to another branch. So this is one of the prerequisite for the stock transfer. If the GST number is different, so as per the government norms, you might be requiring a B2B drug license to sell the products, but within the same GST, you would be able to transfer the stock. So yeah, so that was one part. And what are the benefits of doing the stock transfer between the branches? So many times a customer comes to your pharmacy and they ask for a particular product. So that product might not be available in your pharmacy, but you have another store adjacent to you or in your nearest radius. So you can check the availability of that medicine at your another branch, and you can just ask them to transfer the stock to your branch. So in that cases, the patient at our pharmacy cannot be bounced, or we can serve the customer better. So this is one of the benefits of doing the stock transfer. Of course, the stock transfers, like if you are having multiple stores and you are using the warehouse model, so like we have a plan where the pharmacies can just, the branch can just send a PO to the warehouse can just transfer the stock to the branches. So that is one of the second use cases of stock transfer. Apart from this, the stock transfer is also useful in the cases where, so let's say a product is non-moving at one of your stores, you can just scan the QR code, system will tell that this product is fast moving at another store. So this is how even you can utilize the stock transfer to optimize your inventory. So now we'll look at like this is how the stock transfer can be made. And I'll just share my screen and I can show you the demo of the product. So as you can see on my screen, so this is one of the my branches account. So I can just go here simply. And this is the stock transfer interface. I think most of you guys have seen this interface before. So this is the screen where the stock transfer can be generated. So previously you might have seen different options. Like for example, if I want to generate a stock transfer to my other branches, so I can just click on new stock transfer. I can select my pharmacy name. Let's say demo pharmacy Chandini. Let's say I want to transfer Telma Al H to that branches. So I can just select that product and I can just simply save. Once I save this stock transfer, demo pharmacy Chandni will get a notification that the stock transfer demo pharmacy Neelam has generated a stock transfer for you. So this is how that can be done. Apart from this, we have also integrated like there is a Vitron of course available, so you can book the delivery for the stock transfer also. So now after just saving this invoice, the other branch would get a notification for this. Yeah, I'll show you that interface also, how does it looks like. But before that, you can see now it is in the pending stage. So demo pharmacy Chandni is yet to accept this stock transfer. So once this pharmacy accepts the stock transfer, it would go in the completed stage. You can filter it out to the branch, bill number,
more date and everything you can check out. This is the these are the two screens here. So this is in. So if demo pharmacy Chandini has sent me the stock transfer, so that would be in the in stage. If I have sent any stock transfer to my branches, so you can see I have sent this out to this demo pharmacy Chandini warehouse and demo pharmacy web. So I can see here. So now I'll just log in into demo pharmacy Chandini, and I can show you that interface also. So I can just log in into this account. And you can see there would be a notification that this demo pharmacy Neelam has generated a stock transfer for you. So that would be also visible here. Now we just need to go here in more options here in the stock transfer. This is the in section. So as you can see right now we have generated at 410. So you can see now I'll verify the details whether this product that I've received is correct with the batch expiry and everything. So I'll just keep on click on accept. So the stock will be added back into will be added in the inventory. If the batch is like if the batch number is wrong, or if I've received any any damaged product during the transition during the transit, so I can simply reject it from here. So these are the two options that would be available. So I'll just click on accept, and the stock transfer will be generated. So this is the basically the functionality of generating a stock transfer. Now as I mentioned earlier, that there was one case like when a patient come to the pharmacy and then they ask for a product, like whether this product is not available or not available. So what you need to do is you need to call the other pharmacy, like you check the availability, like we have this on the F3 pop-up where you can see whether this product is available at your adjacent pharmacy or not. But still you have to call, like let's say I have to call demo pharmacy Avi and I have to ask for this product. So to solve this problem, like we have uh, launched a new feature called stock transfer request. So basically what happens is you don't need to do anything, you don't need to call anybody. What you need to do is you just go on a stock transfer request, you search for a product that you require, like let's say I want $650. So I'll just select on it how many strip I need it. I need one. I'll just click on add, and you see this is the check availability option. So if you have multiple items that you want to get it fulfilled from your adjacent branches, so this all of these details would be like you can add the items and you just click on this check availability. Once you click on this availability, so these are the information that in this case is the HO, yeah, the warehouse will not be considered in these cases. If your branches have not updated the latitude and longitude in the profile, so that won't be checked. Apart from this 5 kilometers, the pharmacy in the 5 kilometers radius would be the availability in your 5 kilometer radius would be checked. After you that you click on proceed. So you can see this product is available at demo pharmacy Weibo, and I can just click on generate draft. Yes, I'll just click on yes. Now a stock transfer request for demo pharmacy Weibo has been initiated. Even you can select a picker person, so who's gonna go and there and receive this product. So let's say Suresh is going to collect that product. Once this draft has been created, you can simply send this request to demo pharmacy Weibo, and now Weibo will get to know that this is the ST request. Then he'll just
generate a normal stock transfer the way that I've showed you right now. So this is how the stock transfer request will help for not for the chain pharmacies, not by just looking at their calling and asking for generating the stock transfer. You can just say, raise a request of stock transfer request to this. This is a similar flow that we have is for the purchase order where we are sending POs to the warehouse. So same way, this is not actually a PO, but a kind of you can call. So this is how the stock transfer request works. Yeah, so this was about the overall product demo, how it works. So we are open to questions if anybody has. Hi Hamid, my question is if I have requested any stock transfer urgently and there is mismatch in the physical and the actual product, do we have any option to edit the batch number and the expiry in the stock transfer? No, at the time of accepting Abhilash, we do not have that option to correct the batch because you see there is a mismatch in the batch at the where the request was where from where the stock transfer was generated. So the ideal way is you reject the stock transfer, let the sender make a correction in the batch, and then they can send to you again because then there would be Uh, discrepancy in the batch. So that's why we suggest the preferred way is this, the following that I've mentioned. okay, in case we and the stock transfer created by the another branch can also edit that stock transfer. There is no any such option. Sorry. Uh, in case the stock transfer created from the branch who is transferring the stock can Hmm. update the batch number or expiry Yes. if there is any Yes. physical mismatch. There is any possibility that the sending branch can do that. Sending branch can do the updates unless and until the receiver branch has accepted that. So before accepting, if there is any discrepancy, so the sender can make a correction in the batch expiry or even in the quantity, and then the receiver branch can accept the stock transfer. That would reflect on the receiver's screen. Yes, that will reflect on the receiver screen. Oh, okay, fine, thanks. Yeah. Yes, go ahead, sir. हामिद भाई मेरी आवाज आ रही है? Yes, go ahead, sir. आ रही है. हाँ, मैं तो अभी ये उस प्रोसेस में हूँ, तो आपसे बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं आ पाया। मैं जस्ट यही चाह रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारा जब स्टॉक ट्रांसफर होता है ना, Hmm. तो हमारे को एक दिक्कत ये आने वाली है, मुझे लगता है कि हम जैसे मतलब एक ही जीएसटी में काम कर रहे हैं लेकिन ब्रांच अलग अलग है, तो वहां से हम Right. जैसे अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसकी आउटस्टैंडिंग जैसे वहां पे ब्रांच की कैसे करेंगे? कुछ इसमें है कि आउटस्टैंडिंग दिखती हो, हमें पेमेंट जमा कर सके, उसका ले सके, ऐसा कुछ? सर विद इन द सेम जीएसटी अगर है तो कोई आउटस्टैंडिंग हम्म, नहीं है क्योंकि वो एक ही पान पे आपका है हम्म, और जो आपका पीएनएल बैलेंस शीट जो भी जनरेट होगा परचेज सेल्स होगा एक पान पे हो हम्म। रहा है सर. इट्स नॉट हैपनिंग ऑन द स्टोर लेवल. नहीं, आपकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को उस जो ब्रांच को संभाल रहा है उससे हम कैसे ये करें कि भाई हमने इतना माल तुम्हें वहां से ट्रांसफर करा हुआ है और इतना हमें अब आपने जमा कराया पैसा अभी तक? बट सर लाइक आप वहां पे स्टॉक ट्रांसफर का रिपोर्ट है, आप कितने अमाउंट हम्म, का आपने स्टॉक ट्रांसफर वो ब्रांच के लिए जनरेट किया है वो आप रिपोर्ट के थ्रू हाँ, देख सकते हो कि ये लेट्स से 2 lakhs 5 lakhs का आपने कितना स्टॉक ट्रांसफर किया है सो दैट यू कैन हम्म। सी अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई इतना इस पेमेंट. बिल का नहीं पेमेंट क्योंकि हमने सर इस वो तो पेमेंट है ही नहीं ना एक्चुअली, फिर आपके वो कैश मैनेजमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा और डबल डबल हाँ, एंट्रीज होगी वो केस में. ऐसा कुछ उसमें जनरेट करो, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास है ना एक और क्वेरी आई थी मेरे, ये आपके जो नीतीश भाई है वो गए थे, तो वो कोई पेन चैन चैन स्टोर खोल रहे हैं, उनका भी ये था सवाल कि यार हम जब खोलेंगे तो हम कैसे वहां से मैनेज करेंगे ये चीज? बट सर जो लाइक वी हैव कपल ऑफ चेन फार्मेसीज लाइक जिनके 50 स्टोर्स है कंप्लीटली स्टॉक ट्रांसफर, औषधि फार्मेसी है वी हैव प्रिज्म. सो हाँ, वो हाँ। बेसिकली क्या होता है सर, वो एक ऊपर लेवल पे ही उनका जो अकाउंटिंग है वो क्योंकि एक जीएसटी पे है तो एक ही जगह पे मैनेज होता है और तो सेल्स लाइक इंटरनल। फॉर एग्जांपल आई एक्सप्लेन यू वन सर जस्ट गिव मी वन सेकंड. हम्म, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 लाख रुपए का पूरे मंथ में स्टॉक ट्रांसफर किया है
उसके अगेंस्ट हाँ। मेरा कितना सेल हुआ है, सो दैट आई हैव टू सी। सो वो ऑलरेडी हम आपको दे रहे हैं सर। मतलब इंटरनल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आपको। यस। और एक चीज मेरी ये थी कि अगर अगर उनका भी सवाल था, मेरे दिमाग में भी आया कि हम उसमें कुछ खर्चा डालना चाहते हैं भाई, कि 2% 3% हमारा खर्चा आ रहा है, वो इसमें ऐड करना चाहें। सेम जीएसटी में सर, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हाउ वो आपके लाइक फॉर एग्जांपल जो पीएनएल बनेगा सर, खर्चा आप डालोगे वो आपकी फार्मेसी के जो पीएनएल बनेगा उसमें आप वो डालोगे एक्सपेंसेस में जाके, तो ओवरऑल आपका जो फार्मेसी का जो पीएनएल निकलेगा उसमें वो खर्चा अच्छा, वो हाँ, उस तरह से डालें। में चल रहा है उस तरह से गलपटी, क्योंकि आज पर जीएसटी नॉर्म सर परसेंट चेंज करोगे तो फिर वो 2 रुपए या 5 का काउंटिंग किस आवाज तरह से आवाज आपको क्लियर नहीं आ करोगे, रही। आपको गवर्नमेंट। सॉरी। आवाज अब आ रही है सही, अब बोलिए। अब हाँ आवाज अभी आ क्लियर आ रही है रही है, अब सर। बोलिए। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। कि फिर फॉर फिर एग्जांपल कट। 20 हाँ। रुपीज आपने लिया है, हाँ। आपको फिर अकाउंटिंग में वो रिफ्लेक्ट 5 सेम जीएसटी है तो कहीं से आपने सेल भी नहीं किया है, कहीं से बाय भी नहीं किया है। इससे अच्छा है आप उसको हम्म, एक्सपेंस में डालो जो भी आपके स्टोर का खर्चा है, सो दैट विल रिफ्लेक्ट हाँ इन हाँ योर ब्रांच पीएनएल। हाँ, समझ गया। ठीक है। यस। और मैं एक चीज जानना चाह रहा था, सेम जीएसटी में जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसमें हम्म हमें ये बड़ी दिक्कत आती है कि उसको, जैसे सपोज है ना, ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। अब हम्म। वहां पे जब हम सर्च करते हैं ना, तो वहां पे हमारे को ब्रांच और वो नाम तो कुछ नजर आता नहीं है। सेम जीएसटी में आता है गोयल सर मेडिकल तो एरिया गोयल के साथ, मेडिकल। अच्छा। एरिया है ना हम आपको, एरिया है अच्छा वो, पर है, दोनों चीजें सब। हाँ मतलब एरिया को वो देख करके ही आप डाल पाओगे, वैसे आपको वहीं पता नहीं चल पाता कौन सा ये उसमें जा रहा है। एग्जांपल सभी आवाज गोयल में मेडिकल से दिक्कत आ चल रही रहे है, हैं। आपकी आवाज की। हेलो। हेलो। गोयल रही है। मेरे को ही नहीं आ रही है, औरों को भी नहीं आ रही, थोड़ा पूछो ना। हेलो। हेलो। हाँ एम बोलिए। आई ऑडिबल? हाँ अब ठीक है। यस। हेलो। नाउ एम आई ऑडिबल हाँ क्लियरली? बोलिए। दूसरा क्या हाँ बता क्लियर रहे बोलिए। थे? यस मनोज सर, हाँ दूसरा क्या बता रहे थे आप? हाँ मैं यही पूछ रहा था, जैसे मैंने वेयर हाउस को ट्रांसफर मान लो ब्रांच से किया या ब्रांच से उसको किया, तो वहां पे वही दिक्कत थी कि भाई हमें ये पता नहीं चलती हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे दिखता नहीं है वो प्रॉपर, खाली वो जीएसटी मोबाइल, नंबर से ही सर्च करना पड़ता नहीं हम मोबाइल नंबर और आपका फार्मेसी का एरिया दोनों चीज है। वहां हाँ। पे दिखाते हैं। तो आपको अच्छा वहां से पता चल जाएगा, सॉरी आप कौन से ब्रांच के लिए आप स्टॉक ट्रांसफर जनरेट कर रहे हो। अच्छा अच्छा, मोबाइल नंबर भी दिखता है वहां पे। मोबाइल नंबर एरिया दोनों दिखता है सर। ओके ओके, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करिए आप आगे, है ना। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? Any other questions for stock transfer or regarding the STR request that I have demonstrated? Yeah, so if you don't have any questions, so we can just wrap up the session. हाँ Thank you so हामिद much, भाई, guys. मेरा मैं हाँ हामिद भाई, दोबारा मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा था ना आपको, स्टॉक ट्रांसफर वहां पे दिक्कत नहीं आ रही, वो दिक्कत वहां आ रही है पीओ जनरेट करने में। पीओ तो सर वेयर पीओ में। हाउस के लिए जनरेट होगा। हाँ तो उसमें वेयर हाउस का वहां पे वो जो, जब हम सेलेक्ट करेंगे ना उसको, तो वहां पे वो सिर्फ जीएसटी नंबर से फर्म का नाम ही दिखा रहा है केवल। हाँ तो सर गोयल का वेयर हाउस, गोयल मेडिकल का वेयर हाउस तो एक ही रहेगा ना सर, मल्टीपल तो नहीं रहेंगे वो केस में। नहीं नहीं नहीं, जब हम वहां पे जाएंगे ना, वेयर पीओ सर जनरेट करके उधर डालने के लिए, सेलेक्ट मनोज करने सर, के लिए। Manoj sir, I think हाँ। this is not part of the stock transfer. We'll connect after this call, sir.
Okay, okay, okay. Yeah. If you don't have any other questions, so we can just wrap up this session. Thank you so much, guys, for joining.